Of course, I have to get up often urination because of my other problem, but I am able to get back to sleep well enough. Yeah, sleep and But pain, these are two things that this technique I've always found people helped with yeah, immediately. my So that painkiller is just stopped completely. that is the Painkiller stopped least, completely. Mohanji. That is the least Yeah. goodness of this technique. You can do much more with it. You can do much more with it. You can really do much more with it. Khali, uh, but it's a huge thing, I know, to stop painkillers for a lot of people. But I have always known that people can do away with it. There is one lady who says that for years she has, um, she gets absolutely paranoid if her sleeping pills are coming to an end. She must have always a stock. And I remember the last time when she was tapping with me, and I told her not to take it. Bolti, in any case, there is only one last pill left, and I have been trying to see that if I can sleep without it. So at least someday when it is very, very urgent, very, very, I mean, extreme case, then I will take it. So I said, you please throw that last pill away. And she had the courage to do it. And believe me, she has not taken after that. She just does this technique and she goes to sleep every day. Yes, When it is yes, for yes, yes. nearly 10, 12 years that she Because has been using pills. So what you are doing, and that is detox, no? I am 1 year To old. even stop these, it serves as detoxification of the body. Otherwise, we are adding toxins to our system, and that causes its own problem. Even this getting stuck with these things, also, you can get yourself free from. You can also get yourself free from this difficulty that you're saying of concentration. Give in mind, idhar udhar chala jata hai. Choose to let go distraction. I choose to concentrate. Dono karo. And you will see it will definitely improve. And you Okay. keep at it till you have achieved what you want as your best. Okay. It is 110% possible. Yes. And yes, and I gave you this shortcut because I know the whole technique sometimes you may need help to do it on your own. But this simple one, at least chota chota jo hai, you can do it like this on your own. And it's so easy. Even if you do it for a minute, it's fine. And you can do it 2-3 times in a day. ये भी जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम के ऊपर करना ही है. You do it when you are ready for it. In fact, it is best done when you need it. It is not to be done at a fixed time. ये घड़ी देख के करने वाली चीज नहीं है. जब जरूरत हो तब करने की चीज है कि नहीं? अभी इस काम के अंदर आपको कंसंट्रेट करना है, नहीं हो रहा है, एक बार उस काम को 2 मिनट के लिए छोड़ के ये कर लो. आई चूज टू कंसंट्रेट वेल ऑन दिस, एंड यू विल फाइंड दैट वेरी नेचुरली वो छूट जाएगा और आप अपने काम के अंदर लग जाओ बस कॉन्शियसली. you'll be able to see much better concentration. जहां आप पहले खाली 10 मिनट लगातार कर सकते थे, आप कम से कम आधी घंटा जरूर कर पाओगे. आधी घंटा बाद में फिर एक बार 1 मिनट के लिए कर लो. जहां हम इतना सारा डिस्ट्रैक्शन करते थे, ये कॉन्शियस डिस्ट्रैक्शन ले लो. इट इज ओनली गोइंग टू ब्रिंग यू बैक टू कंसंट्रेशन. फिर आप आधी पौना घंटा कर पाओगे. धीरे धीरे करके आपका वो लाइन, वो समय बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन की क्वालिटी भी बढ़ेगी. I can guarantee you that because I have seen results with even worst of the cases, sir. आपका तो कुछ भी खराब नहीं है वैसे देखा जाए तो. You're much, much, much better off than so many that I have seen improve. Yeah, yeah. You don't really need to suffer it at all. You really don't have to. और आपके पास जानकारी भी है, आप उस जानकारी का इस्तेमाल करके इससे और आगे बढ़ सकते हो. Any which way. Oof. I don't want you to get stuck again. मोहन जी, I'm sorry, उंगली दिखा के बोल रही हूँ, लेकिन उंगली दिखा के बोल रही हूँ. We have got Ananya's address. क्योंकि मेरे को ये लगता है मोहन जी को तो सब पता है. I watch you. For one slap, she'll go flying. And first, I'm not going to touch her unless she touches me. चलो,
Payal, what about you? Yeah, so ma'am, I wanted to talk to you Bolo. about this thing. I have been using the technique, but since last maybe 2-3 days, I am getting stuck because of a particular thought. It's rather more not a thought, it's kind of fear, and that has stepped in because of stay out of the room. Mama, you stay out. 1 minute, ma'am. Just 1 minute. Yeah. Getting out of the room. You're going to. This fear of I've just completed 49 years of age and 50 I've entered into. So this fear of aging, sickness, would darsa. I have younger friends. Younger friends may not accept me. You know, all these mixed fears. Totally mixed. And I'm not. I'm making a statement as you understand and send it to me. I will, if necessary, correct it or add to it and make it more meaningful. Ma'am, this is Abhinivesha, no? It is Abhinivesh. Yeah. In fact, yes, that could be one more thing that I will add when we come to Abhinivesh. I feel it is. लेकिन अभिनिवेश हम क्लेश कहाँ कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? We are only doing yamas. But all the same, you make your statement and send me. And I should. Because statement. finally, that also is an hinsa on yourself, no? It is an hinsa, and I've been doing it, but the fear is just now overtaking. Maybe. What is the other fear? No, this same fear. This is overtaking. हाँ, overtaking, yeah. होता है, बहुतों के साथ होता है, and it can be easily overcome. क्या होता है? क्योंकि बहुत सारा कुछ हम इधर उधर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कभी-कभी आसपास में लोगों के बातों से ऐसा लगने लगता है. We may have given unnecessarily too much importance to youth. Yes. वो भी होता है. Yes, it is that. It is that also. It's a mixture of. It's a mixed bag. जो कि जरूरी नहीं है. In fact, I तो waited to grow old. मैंने कहा कब मेरे सफेद बाल आएंगे? अच्छा, वाव. आपने क्यों ऐसा सोचा? लोग सुनेंगे मेरी सफेद बालों की इज्जत होती है. पर आपने क्यों ऐसा सोचा? वाव. Yeah. I waited to get white hair. वाह. और जब जरूरत पड़ी तो मैंने कलर भी नहीं करवाया. फिर बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी. You know, people around were getting affected because of my white hair. तो मैंने कहा ठीक है बाबा. तो 2-4 साल करवाया था. Once that job was gone, I dropped. I stopped coloring my hair again. अच्छा. I think it's not. I like my white hair. It's the people around who make you feel like that. No, they were getting uncomfortable, which I thought was interfering with my work. Acha. Okay. Bosses didn't want their principal to look in a certain way. Let's not bother them so much. Let me finish with this job. Okay. So then I went and colored my hair. Okay. So I have this tendency where I जो भी आता है वो जल्दी what is it, being influenced, like I have that absorption capacity, वो मेरी influenced जल्दी हो सकती हो. So my environment makes a lot of difference for me. Oh, that's a weakness. Yes, it's a weakness. So you have to overcome that. Well, yes. And it's workable. The fact, I must congratulate you that you recognize this and you are able to spell it out. Yes, it is a weakness and I want to work on it. बहुत ही. In fact, this very statement से शुरू करो. ये आपका अच्छा awareness statement बनेगा. हाँ. That even though I am very easily influenced by my environment, I choose to take charge of myself. You can say,
और see what you feel like at that point of time. आप बोल के देखो और Correct. उसमें लिख के भेजो मेरे को, या तो या हाँ लिख के भेजो तो I can make the necessary improvements on that and send it back to you. ये भी भेजो, बहुत जरूरी है. और this is something that has to, for a yoga student, not acceptable. Yes, so I have realized this and I'm working on it myself, Yes. you know, हाँ. that नहीं, आप and statement there is a बना के lot of भेजो ना, बाकी तो improvement. दूसरा जो कर रहे हो वो भी करते रहो. You never know हाँ. कौन सी चीज कहाँ integrate होके जल्दी काम करने लगे. Gee. So I have over a period of time, there is a lot of improvement in me now. Pehle I would keep quiet, not give my opinions for whatever the reason, but now I'm quite clear because somewhere कहीं पे तो costs आएंगे किसी भी चीज सही के, और मुझे वो बीच में नहीं रहना है. And so I was initially a very strong personality. फिर influences आए, so you try to change yourself. फिर वापस then again. But having said that, willpower is very strong to get out of anything, any situation. Very good. What more? और So willpower, if it gets supported and helped by VCT, सोने पे सुहागा. हाँ, वो willpower pulls me out of anything that is there. वो जो अंदर से अंदरूनी ताकत है to take anything, whatever pain that comes because of whatever I have done, not anyone else. जो पहले सोचती कि environment is like this, that, it's boiling down ultimately to myself and not to anyone. So that God has blessed me with that. Nature has blessed me with that. So yes, but nature gives you both pros. हमारी growth के लिए दिया है. बिल्कुल. So I have to work on this bit because मुझे ये अभिनिवेशा also ना, change is always a little fearful मेरे लिए, जिस पे भी मैंने काफी work किया है, but of course work in progress है मैम. It's a work in progress and I need to now get out of that and have some sort of more conviction in myself and in the truth of things rather than. There it is. You've made your choice statements too. Very good. Very good. It's easier said than done, ma'am. But yes, I'm working. I'm working. अरे ये करके देख. You'll find it really easy. It's as easy to do it as you've said it. Because it really only means to say it. अच्छा. Then the rest, the universe takes care of you, no? Shows you the way. जैसे मैंने बोला, मैं बोलती हूँ, अब ये इतना recent तो इतना distinct था. You know, here I also didn't have to point this out to the client that this has happened as a result of your VCT. That this option घर में था solution और तुमने कभी उसको consider ही नहीं किया. और ऐसी बात नहीं है कि उनसे बात नहीं हुई कभी, you know. लेकिन you know, she just was suffering it. Probably she had decided, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारा काम किया, nearly more than a month I've been working with her. It was extremely, when she was very, very small, an infant probably. So built-in कुछ self-inflicting pain वाला कुछ situation उसके साथ बन गया. Which is what she is carrying unknowingly. But it came through. Because she's also very intelligent and investigating and everything. So at one end, and her intellect is her own enemy now. Because of so much of intelligence, वो catch कर गया है. तो मैंने कहा अब तो उस intelligence को बीच में आई तो देखना. धमका के. So I made her keep her intelligence also at bay with this. Now when she relaxed, तो ये सूझा. और अपने आप से एक दिन फोन किया, फिर मेरे को बताती भी है, बोलती है मेरे को क्यों नहीं पहले सूझा. मैंने कहा इसलिए नहीं सूझा, because you had created these blocks and you were punishing yourself for this. Yeah, now that you have stopped punishing yourself, you are willing to heal yourself. The ways are also coming up, opening up for you. It's not that the solution was not there; it was there right in front of you, but you wouldn't use it. And this goes for you, Mohanji. And the charger. You also need to see this. The moment you relax, and this is what this technique is doing, you're saying you're able to sleep well, you're relaxing in so many other ways also.
So just relax, and lot of options will be open to you, which are there for you, Huh. which are yours to just take it and use it. Hmm. Nature is so benevolent. So, ma'am, I have also, it was my birthday and I indulged Yesterday, on Saturday. So I Saturday, हमको indulged. बताया नहीं, happy birthday, belated birthday to you. कैसे किया, क्या किया? Thank you, ma'am. So I went out with three friends. With three friends gave me a surprise. मुझे कॉफी के लिए लेके गए with the social distancing norms जो भी हम कर सके. और फिर मैं मेरी मम्मा को भी मिली. I met my Okay. mama also. Good. And I went out for a small dinner with my husband and my daughter. So it was a lovely birthday. हाँ हाँ. And, yeah. अच्छा, So now, इसलिए एज रिलेटेड fears शुरू हुए. जी. So it's because of that only, because I Correct. completed 49 and started my Correct. 50th. And so for Proud that, to be 50. ऐसा sorry, करना. Say Huh? proud to be 50. yeah. Don't put 50 at all. Don't put 50 at all. Good. हाँ. Thank you. So that's the thing. So I indulged. So उसमें भी when I was reading the Brahmacharya and all that, I was feeling guilt कि मैं इतना spend कर रही हूँ, ये वो करना भी है और नहीं भी करना है. हाँ. Mixed नहीं, that emotions. clarity we need to give ourselves, क्योंकि balance रखना है. जी. Yoga is also all about balancing. Yeah, ma'am, that's correct. But But at the kabhi same time, we have to be prepared for consequences. correct. For the cost that we'll bear for it, for the वो तो होगा ही होगा. बिल्कुल. So, पर उसमें guilt at least can be avoided. Correct. नहीं, गिल्ट अवॉइड करने के लिए तभी तो बोलती हूँ ना, बैलेंस रखना है. हाँ. तो अब गिल्ट तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अभी डिनर के लिए ही जब निकल गए हैं, हाँ. तो यू नो दैट यू आर गोइंग टू डू दिस रॉन्ग, तो फिर वो रॉन्ग करके गिल्ट करने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता. हाँ. यस, गिल्ट तो तब हो कि जब शायद जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी, हो गया. हाँ. तो फिर भी उसके अंदर लिए भी गिल्ट करके तो कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता. जी. गिल्ट को तो रिप्लेस ही करना होता है विद सम सेंसिबल, नॉलेजेबल एंड आगे के लिए सोल्यूशन. लेसन फ्रॉम दैट गिल्ट सिचुएशन एंड टू बी एबल टू करेक्ट इट. पर हमेशा मैम, और आगे नहीं करना है उसको. पर मैम हमेशा it's not that easy to आगे नहीं करना है. नहीं, अब इस टेक्निक के साथ में है. How ma'am? Because I know. इसके साथ में है. So I want to understand that, ma'am, that if I am going to continue, कि मैं next If I birthday am- पे भी, if I am going to continue and go out for this dinner, okay, and have a glass of wine or two, I am going to do it. तो फिर इसका तो मैं तो नहीं निकलने वाली इससे. I am going लेकिन to. उसका गिल्ट मत करो. You did it consciously and it had a purpose that you had to, be with this company. You did not want to. अब उसको measure करना सीखो. हाँ. प्रतिपक्ष भावना is all about मृदु मध्य अधि, मृदु मध्य अधि, मृदु मध्य अधि. हाँ. है कि नहीं? तो हाँ. measure करना सीखो और उसके appropriate पश्चाताप करो. Whichever way, and पश्चाताप हर कोई अपना अपना चुन सकता है. So how is Paschatap in this? No, penance, whatever penance you think of, will Like what, ma'am? rectify it So- for you. So how, Yes, ma'am? then now you will not touch it, or you will not have it for so that कुछ बाधा वाधा ले ली. There could be So so there many is- types of penance. So there is a solution to this. मैं कर सकती हूँ कि भाई मैंने ये गलती हाँ. की है और इसके लिए मैं गलती अपने नहीं आप की है, को तुमने जानबूझ के किया है. हाँ, गलती नहीं की है. Yes, जानबूझ के गलती नहीं है, किया है, जानबूझ के हाँ. जरूरत थी इसलिए ये करना पड़ा. अब जैसे जी. जैनियों के अंदर हाँ. दिवाली पे जब वो लोग साफ सफाई करते हैं तो कितने सारे जानवर, मच्छर वगैरह मरते ही हैं. जी. राइट. जी. तो उसके बाद में वो क्या करते हैं? मिच्छामी दुक्कड़म. मिच्छामी दुक्कड़म के अलावा वो 4 दिन का, 7 दिन का कुछ उपास करते हैं. अच्छा. पेनेंस करते हैं उसके लिए और बाकायदा माफी मांगते हैं. अच्छा. So there is a solution to this. हाँ, it conducive in the sense at least you are not guilty, because guilt is the worst thing that one can do, because there is nothing that guilt solves.
Guilt only spoils. Guilt only spoils things. There is absolutely nothing that guilt can help with. कि मुझे बुरा लग रहा है करके जो आदमी रहता है, ठीक है, ये चीज बुरा लगने जैसी है, इतना जानकारी होना काफी है, बराबर है, उतना काफी है। तो उसके लिए उपाय करने की जरूरत है कि कम से कम आगे ये नहीं हो, उसके लिए उपाय करना है। और जब तुम जानबूझ के ही उसके अंदर जा रहे हो कि ये आवश्यक है करके, if you are doing it just for pleasure, then definitely it is hinsa, out and out and an intense kind. जानकार व्यक्ति जब करता है तो वो हिंसा तीव्र हो जाती है, बड़ी वाली हो जाती है। अनजाने में जो हुआ है तो वो मृदु रहती है, मध्य रहती है। करेक्ट। ठीक है, तो अब तुम जानबूझ के कर रहे हो और अवॉइडेबल है, उसके बावजूद कर रहे हो, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यानी कि वो ग्रीड की वजह से है फिर, या कोई डिल्यूजन की वजह से है कि तुम्हें लगा कि नहीं ये वाइन लेने से ये सब ठीक हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, इसलिए उस सिचुएशन के अंदर लेना जरूरी था, इसलिए लिया। वो भी तुमने नहीं प्राप्त किया और खुद का ये जो प्रोग्रेसिव मार्ग सोचा था उसके ऊपर भी तुम पथभ्रष्ट हुए। तो दोनों प्रकार से तुमने अपने आप को नुकसान कराया, तो ये दोबारा नहीं करना है। उससे भी ये सीख लेके उसको छोड़ देना है। अरे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया करके रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं रोती, आई डोंट, बट रोने की आई मीन वो गिल्टी फील करने की, व्हाट आई मीन इज, आई अंडरस्टूड पर इसका देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? दैट ओके, मैं फॉर मे बी फॉर 2 months आई वोंट। हाँ, यू टेक दैट एब्सोल्युटली। और यानी अपॉर्चुनिटी भी नहीं आने दूंगी, दैट आल्सो इज अ टू यू। प्रतिपक्ष भावना एक चीज ये और सिखाती है कि इट इज फाइनली अप टू यू व्हाट यू अट्रैक्ट। करेक्ट, it's me who's attracted. Yes. I fully that. तभी तो पर वो कर ही लिया है, क्योंकि अट्रैक्शन तो कहीं पास्ट में से करते हुए आए हैं, तभी आज वो सामने आया है। हाँ। एटलीस्ट आज से हम अट्रैक्ट करना छोड़े तो फ्यूचर में ऐसा कुछ सामने नहीं आएगा। But ma'am, I mean the friend circle that I have, I am moving around in. वो it's not possible कि मैं totally छोड़ दूँ। हो जाएगा। I have known people, they will go sit with that kind of friends, and the friends are perfectly okay with that person not having it. They will let him be, and they still enjoy it with. It is possible. It is possible. It is. Yes, it is possible if I decide. Yes. And you're not rigid possible about it. You see, you will explain it to people, and if they are really friends, they will respect it. But they will respect it only as much as you respect it. Correct. मेरा ही mirror effect होगा. Totally तुम्हारा. मेरा ही mirror effect. So slowly मेरे पे ही है. Slowly, gradually. उतने दिन तक जो हिंसा होगी उसका पाप सहन करना पड़ेगा। Yeah. Correct. I'll have to be ready for that. हाँ, exactly. क्योंकि आप जानकारी से कर रहे हो। जो जानकार होके जो गलत काम करता है उसका पाप बड़ा होता है। तो उसके लिए दुख अज्ञान अनंत फला प्रतिपक्ष भावनम, है ना? टफ है मैम। उसका तो दुख आएगा ही, आएगा। अज्ञान भी होगा ही, क्लेश भी बढ़ेंगे ही। So not to complain about those. तो at least उतना वो शांत हो जाएगा। Know it that it has come because I have asked for it, attracted it. Okay. ठीक है ना? What do you say, मोहन जी? एकदम स्थिर होके चुप होके सुन रहे हो। You're not participating. When two persons are talking, I'm hearing. Not one to one. आपके सामने बात कर रहे हैं ताकि आप भी participate करो। But I'm trying to learn from it. I'm trying to learn from what. I thought you will contribute. You have so much experience in life. Sometimes we do something which we feel we should not be doing.
we do do that, and then Sorry, how we often do something which we feel we should not be doing, and then can I you hear realize, him, Payal? no, Yes, yes, I can. Okay, Yeah. मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या sometimes बोल रहे हैं. we do something which I know I should not be doing. Hmm. Then I find by God's grace that I get the reward, the negative reward for that soon. I'm happy that that reward is gone, that I'm going to pay for it further. Okay, I have often done something which I know I should not be doing it. I have done it. And by God's grace, the reward for that, the negative reward has come in this life itself. I'm happy. Oh, wow. मतलब आप expiation of karma बोल रहे हैं. There's no continuing karma for that. I've Excellent. made so many mistakes for which, by God's grace, I have paid for them in this life itself. Ma'am, I didn't understand what he said the last part. He Huh? says he's done so many mistakes for which he Huh? has paid for in this. For which I have got, I mean, the punishment for that Yeah. in this life itself. I'm happy it's Happy come that in it's this life, over. then I don't have to pay for it in the next life. Yes. all. हाँ मतलब आपका कर्मा वो आपने भुगत लिया है. हाँ. गलत किया मैंने. हाँ. जो And भी then गलत किया, उसको भुगत लिया. I have paid for it, realizing कि ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, Correct. लेकिन किया, हाँ. ठीक है. I paid for it. I'm happy I paid for it in this life. I'm not going to carry the next life. हाँ. So, Payal, that's a clue. Yeah. है ना? That's what we Yes. wanted you to share, sir. ऐसी बातें Yeah. बोला करो उनको. Hmm. अनुभव वाली. Hmm. Yeah, Hmm. right. hmm. Yes, अनुभव, experience. Yes. Unless मैंने ये किया, ऐसे किया, इसके ऐसे हुआ, ठीक है, अच्छा चलो, हाँ. clear हो गया. हाँ, वो exactly. Clear. उसके पीछे guilt होना है और that is very bad karma. Sorry? What is that bad कर्म? वही कि ऐसा किया करके जो you know Hmm. रंबल करते रहते हैं और बुरा फील करते रहते हैं. That is the worst karma. Okay. यानी वो जो बुरा किया है उससे भी ज्यादा बुरा ये होता है. हाँ. Okay. I sent you PDF in Can't the hear. group. देखा आपने? Self watch करके? I'll have yes आपने जो आज वो हाँ. अहिंसा का टेबल भेजा है वो ना मैम. हाँ, right. तो वो समझ में आया कैसे यूज करना है? Yes ma'am. Every day you can put down the date, draw a table like that in your whatever diary or page or whatever. Yeah. And thought, speech, action. If you want, you can do a separate page for each of the yamas. Or if you want to just stick to ahimsa first, you can do just ahimsa. It has an excellent impact if you do it for a month at a stretch. What I will say is, but do it at least for a week. At least किसी एक यम के ऊपर तो करो कि thought, speech, action में कितना हो रहा है दिन में. So either you can do reflection at the end of the day, means you just recall every event of the day and see how often in thought, in speech, in action you were being violent. So just उसका tally mark रखो और उसको observe करो, note करो कि एक week के अंदर क्या तुम देख पाते हो. And we can talk it over as to क्या result निकला. So if both of you can do that, it will be a very good kind of a support to the system that we are using of VCT on this. Because the revelation that this table will bring to you about yourself can sometimes be mind-boggling. You know? Huh? Sometimes not. Mind-boggling it can be. Or it can be something कि okay, I know that, like मोहन जी का जो attitude है, तो यार ठीक है, ये हुआ, ये मेरे से हो रहा है, ये जानकारी हुई, तो अब इसका आगे क्या करना है ना? तो वो जो क्या करना है is what I want you to figure out. Actually, I have already taught it to you. The moment you're faced with it, you will probably also know what to do. But while you're doing it in the course, I will be there to support you, is what I say. So करिए उसको. And this is something for a lifetime. I have been
I made this chart in 1987. अच्छा. तब से यूज कर रही हूँ मैं. And I have used it with young children, and I have used it with 80 years old to the same effect. To the very same effect. Okay. And all of them at all age group, from all walks of life, have equally benefited. So I am ठप्पा मार के गारंटी दे सकती हूँ इसकी इफेक्टिवनेस. इतना सिंपल है और इतना इफेक्टिव है. It is even simpler than doing VCT. So, ma'am, you are a yoga teacher since 1987. 86, हाँ 87 actually. 1986 I completed my teacher's course. Okay. 31st December 1986. I completed my course. So 30, almost 35 years आपको हो गए इसमें. Nearly. Okay. Okay. So that's one. Now, today on, I have finished sending you whatever I wanted to communicate to you, and you have worked on it all very well. And I think you have in good depth, grasped the concept of Pratipaksha Bhavna and understood the significance and importance of Vipaksha Bhavna. Can I say that comfortably? Yes, ma'am. What about you, Mohanji? Yeah. Right? Okay. And you have also started working on it. You both have started taking action on that. And you have already experienced wherever some undesirable, some negative is there, how you must have something positive for it. Luckily, with VCT, even if you do not have something positive of the Vipaksha, there is a landing ground in between of free from. So these two techniques are so well, made for each other. क्योंकि कभी-कभी एकदम opposite में जाना मुश्किल होता है, तो we have landing in between of getting free from. अब जैसे एंगर था तो फ्री फ्रॉम एंगर, गिल्ट है तो फ्री फ्रॉम गिल्ट, क्योंकि ऑपोजिट गिल्ट का इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ता है विपक्ष में क्या चुने. तो एक बार जब फ्री हो जाओगे तो तुम्हारे पास में जो भी कुछ स्टॉक है आप उसमें से एक विपक्ष का चुन सकते हो. Okay? So that is how I have tried to complete this entire gamut, integrating the theoretical aspect of Vipaksha and Pratipaksha Bhavna, as well as giving it to you for action with VCT. So you actually experience a shift in some thought processes, some mental processes, some feelings. And it should finally also reflect to some extent in your behavior, because behavior is the last thing that should change. हम लोग जनरली, अब जैसे तुम विल पावर की यूज की बात कर रही थी, अक्सर क्या हो जाता है, विल पावर से हम बिहेवियर चेंज कर लेते हैं. और खाली बिहेवियर जब चेंज होता है ना, तो वी गेट ऑन समटाइम्स मिसलेड बाय आवर ओन बिहेवियर. Yes. तो VCT can correct that also, help you कि अच्छा तुम ये विल पावर यूज कर सकते हो, लेकिन इसको विल पावर को खाली बाहरी वाले बिहेवियर पे मत यूज करो, यूज इट एट अ मोर डीपर लेवल. और वो डीपर लेवल पे जाना कैसे है वो VCT हमारे को दिखा देता है. I learned this very early at the Yoga Institute, and I finally converted it into a concept. I call it, it's my most favorite concept, behavior tree. Behavior tree. I've called it, I've given it a name, behavior tree. So tree, jhad. Tree, okay. So why do I call it a behavior tree? So this is a tree where the leaves and the flowers and the fruits, the external that is visible of the tree is your behavior. Yes, some ordinary daily behavior, कुछ एक beautiful है, एक special है, fruits का, flowers का, like that. Okay. So varieties of behavior that you have. Now, leaves, flowers, fruits, they are born by the
twigs and the branches of the tree. Yes. The behavior is an expression of your attitude. So if the leaves, fruits, flowers are behavior, the tree, the branches and the twigs are the attitudes. Hmm. Okay, makes sense? Yes. 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 As our attitude, so will be our behavior. Yes. So psychologists, they work on the attitude at the most. But आजकल psychology ने अपने आप को behavioral science बोलना शुरू कर दिया है. So it हाँ. means how superficial they are in their work. Right. Correct. But to some extent, they do give some solution to some Yes. attitude building. Yes. Okay. Yes. Now these branches and the twigs, they are borne by the trunk of the tree. Hmm. So the trunk of the tree is equivalent to the value systems that you uphold, the beliefs that you have, that you live by, that you always put in forefront Hmm. of your decisions. So the trunk of the tree is like your value system, which you have gathered and collected over the years in life. Now, what remains are the roots, which is the real thing. Hmm. You pick up those value systems in life depending upon what your motives are. Your roots are the motives. So the behavioral sciences, they work on the behavior. A little bit of psychology, etc. It works on the attitude. Occasionally, you will find the people in the religion, etc., might also work on value system. But yoga begins by working on the motives. Motives are the intentions, ma'am. Are they? The real motive, the real intention, that hidden ulterior goal that you have, that are your motives. And luckily for us, yoga also gives you what motives you can have. The motives are supposed to be the 4 purusharthas, what is technically called as purushartha. And they are dharma, artha, kama, and moksha. So you can actually choose your motives. In case you are born with the wrong motives, you can change it. So you can actually change the genetic expression, in other words, of your whole being. What bigger? That's your samskaras, ma'am. Yes, That can be changed. absolutely. Memories, no? Memory potentials. And you can change it. If you correctly understand your motive, you will build up a value system which is suitable to those, to fulfill those motives. You will have that kind of attitude, and that is the kind of tree you will be. The flowers, fruits, and leaves will be expressed. So the behavior actually is a reflection of your attitude, is a reflection of your value system, is the reflection of your motives. So if we only change the behavior, then it is like just the grafting, the decorative part, and you've not really undergone a real internal inner core transformation. The Amrit Manthan, as you mentioned it. Correct. So I am sharing this very precious behavior tree concept with you today. So see at what level. Now ये जरूरी नहीं है कि हम आज से ही पूरा एकदम ओवरहॉल कर देंगे, दूसरा नया ट्री बन जाएगा नहीं. करेक्ट. सो लेकिन इतना जरूर है कि हम खाली बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश ना करें. बिहेवियर सिर्फ जो इमीडिएट ऐसा चाहिए कि भाई, जैसे मैंने बताया, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, अब ये बाल कलर करना एक बिहेवियरल जरूरत थी उस सिचुएशन को सेव करने के लिए, एंड इट वाज नॉट रियली हार्मिंग मी वेरी मच. ऐसा भी कुछ नहीं था कि भाई नहीं मेरे को करना ही नहीं है, ये भी नहीं था. I didn't see value in it, so I wasn't doing it. But if it was so adversely affecting so many others,
एंड विद दैट स्मॉल चेंज, वो हमारे मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि मियाँ जी को सलाम के लिए नहीं उठाने का, कि हाँ। खाली सलाम करने से मियाँ जी खुश होते तो कर देने का ना, क्या पकड़ता है। तो ऐसे वो कहावत वो करके मैंने कहा चल ठीक है, बाल कलर करने से ही तुम्हारे को सबको संतोष मिलता है, तो लेस हेडेक फॉर यू एंड फॉर मी, कर लिए। So, ये एक बिहेवियर चेंज वो हुआ एक बैलेंस रखने के लिए, पीस के लिए, बट आई शुड बी विलिंग टू फॉरगो दैट, इट शुड नॉट बी। अब जैसे मैंने अब एक कसम खा रखी है भीष्म पितामह की तरह, तो फिर मैं नहीं चेंज कर सकती, राइट, इफ दैट इज दैट वैल्यूएबल। लेकिन यदि कृष्ण है कि जिसने कसम खाई थी कि मैं इस युद्ध में क्या हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन Yes. जरूरत पड़ी तो सीख देने के लिए शस्त्र भी उठा लिया। तो वो दैट इज योर मोटिव। ही सेज मैं धर्म के लिए कुछ भी करूंगा, और भीष्म बोलता है मैं इस कसम के लिए कुछ भी करूंगा। सो हु स्वधर्म इज व्हाट, ओनली दैट पर्सन कैन डिसाइड। तो ऐसी बात है। तो अपना मोटिव क्या है, वो स्वधर्म जो है वो मोटिव है। तो तुम्हारा अपना मोटिव क्या है, तो मोटिव तुम्हारा पहचानने के लिए भी तुम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज दिस कनेक्शन, you can find out what your real attitude is. I think the other day when you were sharing that, and I was very happy that, oh, that has come before I'm giving you this concept, so I will be able to give it this to you as an example of your own. You shared that you were getting angry at yourself for something, then you found that the problem really was not with you, it was with the ignorance of technology. Yes. है कि नहीं? Yes. Yes. तो ये जो समझ थी तुम्हारी, ये वैसी समझ थी जैसे हम खाली बिहेवियर चेंज करने जा रहे थे, लेकिन वो बिहेवियर बार बार मान नहीं रहा था, वापस उल्टा हो रहा था, वो क्योंकि एटीट्यूड गलत था। तो फिर तुमने एटीट्यूड के ऊपर काम करके एटीट्यूड ठीक किया, तो वो बिहेवियर थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि खाली एटीट्यूड ही चेंज हुआ है, एटीट्यूड बन रहा है वैल्यू सिस्टम से। तो देन यू कीप गोइंग डीपर इन, ऐसा। तो मालूम पड़ा कि अच्छा टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को सीखने के अंदर ये चिढ़ आती है, हमारे को अच्छा नहीं लगता है। Not accepting that you don't know certain things and you need to learn. Exactly. तो वो एक समझ में आ रहा है कैसे जड़ के अंदर जा रहा है। जी Yes. जी जी So, जी। the same way is the behavior tree. ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द माइंड रखो, ताकि तुम्हारे को तुम यदि देखोगे, मैं जब कभी भी तुम लोग स्टेटमेंट भेजोगे, अब आज से तुम लोगों को भी स्टेटमेंट भेजना है, जब कभी तुम्हारा जो भी बनता है, जरूरी नहीं है कि एक ही भेजना है, तुम एक से ज्यादा भी भेजो, कंबाइन करके बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से तुम्हें क्या लगता है कि अच्छा, तुम दोनों को तो मुझे 5 यम नियम बताने की जरूरत नहीं है। पायल तुम्हें भी याद है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना? Yes. तो Yes. मेरी कोशिश होगी अभी फ्रॉम टुडे टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, नहीं एक तो हम कल भी मिलेंगे, तो कल मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगी हम जो आगे करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश होगी कम से कम एक यम एक दिन में मैं जरूर भेजूं, और जो मैं भेज रही हूँ उसके ऊपर भी तुम टैपिंग करो, लेकिन तुम्हारा अपनी तरफ से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हिंसा के लिए क्या चीज के ऊपर टैप करना है, क्योंकि हिंसा भी तो अनेक 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 प्रकार की हिंसाएं हम करते हैं। तुम्हारे लिए कौन सी सबसे मुश्किल वाली हिंसा है जिसको तुम्हें निकालना है अपने आप में से, तुम उसके ऊपर बनाओ। इन एडिशन टू व्हाट आई एम सेंडिंग, मैं जो भेज रही हूँ उसके ऊपर टैप करोगे ना, तो तुम्हारा जो अवेयरनेस बढ़ेगा, उसमें से भी निकल के कुछ और एक सामने आएगा जी। यदि कुछ आता है तो वो भी भेज दो कि दिस इज व्हाट यू थॉट ऑफ, तो आई कैन प्रॉब्ली सेंड यू समथिंग एडिशनल इफ रिक्वायर्ड। लेकिन यदि सिंपल सा हुआ तो तुम लोग को भी दोनों को स्टेटमेंट्स बनाने आते हैं, एक सिंपल वाले स्टेटमेंट्स, तो तुम दोनों माहिर हो गए हो उसमें, तो वो बना के उसके ऊपर टैप जरूर करना। तो इस प्रकार से तुम्हारा 2 या 3 टैपिंग स्टेटमेंट्स एक दिन के अंदर हो जाएंगे। तो 2 तो हो ही जाएंगे, एक तुम अपना भी करोगे और एक जो मैं भेजूंगी तुम्हारे को वो करोगे। तो हर एक दिन एक एक यम के ऊपर मैं तुम्हारे को छोटा सा राइट अप और उसका एक टैपिंग भेजूंगी, ठीक है?
Okay, ma'am. तो ऐसे करके हम एक एक दिन में एक एक यम और एक एक नियम पूरा करेंगे। उस बीच में यदि कोई सवाल आता है मन में तो पूछ लो, उसमें ग्रुप में भी डाल दो, या तो ग्रुप में ही डाल दो, यानी वैसे कल तो हम मिलेंगे ही। अब आज जब ये माइंड में अपन ने डाला है तो उसके रिजल्ट से यदि कोई प्रश्न आता है तो कल अपन पूछ लेंगे, वेबिनार में वो सॉल्व करेंगे, है ना। और नहीं तो हम कल बात करेंगे हमारे यमों के बारे में, इन जनरल हाउ टू व्यू द यमस, एंड अ लिटिल जो डिस्क्रिप्शन में वैसे भी डालने वाली हूँ तुम्हारे को पोस्ट बना के, थोड़ा सा उसके बारे में हम क्लैरिटी के लिए, अब मोहन जी क्या समझते हैं हर एक यम के बारे में, आप क्या समझते हो, मैं क्या समझती हूँ, हाँ, हम इस चीज को शेयर करेंगे ताकि उसका एक थोड़ा सा स्कोप बन जाए इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम स्कोप समझ लें, और उस स्कोप में से जो एक मुख्य बात लगेगी मेरे को, मैं उसके लिए आपको वीसीटी बनाकर जरूर भेजूंगी। ठीक है ना। Okay. Okay, ma'am. और क्या लगता है कि मोहन जी आपका क्या विचार है यम नियम की प्रैक्टिस के बारे में? Just start. ओके, कर रहे हो, ठीक है, करने के बाद बताइए। चलो, तो आज तुम थोड़ा वो सेल्फ वॉच वाला एक ड्रॉ कर लो अपने टेबल, Yeah. और आज से उसकी एंट्री शुरू करो। सो फॉर ma'am. वर्क इट इज सेल्फ वॉच, और बिहेवियर ट्री को अपने शब्दों में कहीं पर नोट करके रखो। मैंने जब उसको पहली बार सोचा था तो आई एक्चुअली पिक्ड अप वन ट्री का आउटलाइन फ्रॉम द इंटरनेट, और उसके ऊपर बनाया। अब हाथ से भी बचपन में झाड़ बनाते थे, वैसा ही बना के उसको बनाया। Then finally, where I was last school, where I was a principal, they needed some concept to cover an entire big wall. एक blank wall था, उसके ऊपर कुछ लगाना था उनको. So I gave them this idea, and they luckily had a very good artist. उसने पूरा उसका विनाइल का बना के बिहेवियर ट्री लगाया. I used to love it. उसको लीव्स के शेप के ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक एटीट्यूड लिखा हो, ब्रांचेस के ऊपर. Wow. मजा आया, यू नो, वैरायटीज ऑफ, एक तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, एक तरफ नेगेटिव एटीट्यूड्स, और उसका कलर थोड़ा अलग कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव का. इट बिकेम सच अ ब्यूटीफुल थिंग. So, ma'am, where do these the thing like self improvement, self growth, self effort, acceptance, self acceptance, and acceptance, love, self love, where do these fall? Obviously positive attitudes. No, but attitude. Nah, they will fall under attitude. Attitudes. And so, what is the motive? Say, for example, self improvement and self learning throughout the life. No, Just for my understanding purpose. no. Motives are dharma, artha, kama, moksha, and the opposites. Opposites Adharma. are adharma. Adharma. Moksha is what? Moksha is Actually all four cycle are of supposed suffering. to be, yeah, instead of going higher up in progress, you go down. स्वर्ग में जाने की बजाय नरक का रास्ता पकड़ो. और अर्थ इज money. अर्थ इज वो यहाँ कमाई करने की बजाय, दूसरों को दान करने की बजाय खाली होड़ करते रहो, या बर्बादी के कामों में लगाओ. और काम टेररिस्ट वालों के पास में भी अर्थ है. करेक्ट. वो अनर्थ है. और desire is kama is desire. Desire. So you have positive desires which are refreshing. Means enjoyment. You must enjoy yourself. You must be cheerful. Correct. But तुम्हारे को cheerful होने के लिए यदि drunkard बनना पड़ रहा है तो वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना. Okay. So those kind of desires are not the right kind. No, but if it's not drunkard, but you're just enjoying one drink, that is not. That is okay. वो तो that's why I'm saying ना, वो तुम्हारे को देखना है. हाँ, वो मुझे देखना है. हाँ, स्वधर्म, वो स्वधर्म है. Yes, yes. Nobody else can sit on judgment over And it. I am doing insa to myself if it is affecting my health. Yes, वो तुम्हारे को देखना है. फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, सोशल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. Correct. I'm spending monies on that also. वो अलग, वो भी अनर्थ Excessively है. वो पूरा आता है ना. बिल्कुल. You are good, great, very quick. अरे मैम, quick, I wish quick थोड़ा
deep rooted understanding में आए, आएगा। behavior. ये करते रहोगे जरूर पहुंचोगे, I guarantee, because the kind of healing I have experienced is something that I wasn't even aware कि ये कहाँ से आ रहा है, and still I've been able to heal it without knowing its origin. So therefore I often say कि मैंने तो past life karma को भी heal किया है, because only past life you don't know, ना. Correct. Because I went as much deep and as much to the background to try and find out, but I couldn't see anything that could have caused it. But it was there, so prominent. But probably, ma'am, it could be there to push you on this path. No, that that did not was push also- me. That was in addition. One fine day, I just got fed up. I said, I can't tolerate myself behaving in this manner. I have to get at it. और पीछे पड़ गए उसके ऊपर EFT करने को. But why, because you are an inspiration to us, no? Oh, maybe. No, it is a truth, man. That is probably your dharma. For in that sense, कि आप जो spread कर रही हो this Aishwarya Bhav that you have. Wow. But that's the truth, no? That is what it is, no? Very man. true. Very true. It is infectious. That it has always been. Touch wood. I know. Man. God has blessed me with that. I'm a born teacher, as I always say. Yes, ma'am. And you have a proper firm hand also. I know. मोहन तक को नहीं छोड़ा. Compassion भी जहाँ चाहिए, आपका compassion भी No, है. he has been my student also, no? You were, when did you do your TTC, Mohanji? 2005-6. Then 2005, correct. 2005 में मैं शायद, I think I was teaching methodology in your 7 months then. No, I don't think you taught me anything. No, we didn't teach. 2005 में 2005, 13th there August. were about 4 years or 5 years where I was not teaching in TTC. I think you didn't teach us. So maybe it is during that time that you were there. Yeah. Taruna was there. No. Yeah. Chalo. How nice. We've had a long session today. Yes, But ma'am. a Thank very you fruitful so one. much. Thank you. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you all. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. See Okay? you tomorrow, ma'am. See you. Yes. Bye-bye.